Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी से अभी हम जुड़ेंगे और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Key stocks rebound by more than 1%. Sensex closes above 49,000 mark. Nifty settles above 14,500 level. Rupee appreciates by 11 paise against the US dollar. And global equity indices climb amid attractive valuations and optimism about economic recovery. प्रमुख बाजार सूचकांक 1% से अधिक के उछाल में। सेंसेक्स 49,000 के स्तर से ऊपर और निफ्टी 14,500 के ऊपर हुए बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की मजबूती रही और आकर्षक मूल्यांकन और आर्थिक सुधार पर आशावाद के बीच वैश्विक शेयर सूचकांक तेजी में। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी में आज फिर तेजी लौटी और वे 1% से अधिक के उछाल में रहे। वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत लेते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स भारी बढ़त के साथ 49,000 के स्तर से ऊपर पहुंचा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी बढ़कर 14,500 के स्तर से ऊपर पहुंचा। सेंसेक्स 1.17% की तेजी से 568 अंक बढ़कर 49,009 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 1.27% की वृद्धि दर्ज करता हुआ 182 अंक बढ़कर 14,507 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी वृद्धि का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.66% के उछाल पर बंद हुआ। स्मॉल कैप सूचकांक में 1.08% की बढ़त दर्ज हुई। Sensex and Nifty today rebounded by more than 1%, taking positive cues from the global markets. The Sensex at the Bombay Stock Exchange surged to close above 49,000 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange climbed to settle above the 14,500 level. Sensex gained 568 points, 1.17% to 49,009, and the Nifty rose 182 points, 1.27% to finish at 14,507. Mid-cap and small cap at the BSE also rose. Mid-cap index gained 1.6%, while the BSE small cap index ended 1.08% up. In the Sensex pack, shares of 26 companies gained while 4 logged losses. Bajaj Financial Services climbed 4.5% and Asian Paints surged 4.3%. Titan gained 3.8% and Hindustan Unilever added 3.5%. On the other hand, Power Grid fell 1% and IndusInd Bank slipped more than 0.5%. In sectoral indices, all 19 sectors climbed. Metal sector stocks were the top gainer as it ended 3.5% up, followed by capital goods sector, which gained 2.8%. Telecom added 2.2% and basic materials ended 1.9% up. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,620 companies rose while 1,340 fell. Shares of 174 companies remained unchanged. And we now joined by Puneet Jain, Senior Economic Journalist on Market Mantra. A very warm welcome to you in the program, Puneet. Thank you, Arjun. Puneet, we saw the market gain cross the 49,000 mark, and the chief sector to gain was a metal index, another beta sector gained by 3.6%. What were the reasons, and what do you foresee for this sector in the coming week? So, Arjun, basically what we saw was that the markets rebounded from lows that it had witnessed, because of selling by certain, I would say, HNIs and institutions over the last couple of weeks. And that was mostly profit booking in sectors which had done well. Today, what we saw was basically short covering to some extent by traders, and also what we witnessed was value buying by long-term investors. And basically what we have seen is that the commodities which had taken a beating in the last 2-3 weeks,
those commodities, they gained not only in local trade but also in global trade. So I think markets are mostly reacting to that upside in commodity prices, and chiefly the metal index was a big gainer out of that. पुनीत, जैसा आपने कहा कि पिछले 2 सप्ताह से कुछ हम एक बेयरिश सा ट्रेंड देख रहे थे बाजार में. इनफैक्ट अगर हम इस पूरे सप्ताह पर नजर डालें तो लगभग 1.5% की नेट गिरावट है. लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उछाल बाजार में, उसमें सारे सेक्टर्स में उछाल आया है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी हमने अच्छी तेजी देखी है. तो आपको लगता है कि बाजार का जो अंडरलाइंग करंट है वो अभी भी स्ट्रेंथ का है और आगे भी हम तेजी की उम्मीद कर सकते हैं जो हम पिछले मार्च से देख रहे हैं स्पोर्ट्स में? बिल्कुल सुनो, देखिए ये जो सप्ताह अभी खत्म हुआ है ये एक प्रकार से मैं कहूँगा हिस्टोरिक एक लैंडमार्क है, बिकॉज इस पूरे एग्जैक्टली 1 वर्ष पहले 22 मार्च को इस सप्ताह लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई थी और उस वक्त मार्केट में बहुत भारी गिरावट आई थी. करीब करीब नीचे के सर्किट लग गए थे ना सिर्फ भारतीय बाजारों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और वहां से करीब 7,500 का निफ्टी का लेवल था और करीब करीब अगर हम देखें तो वो एक वर्ष में उस बॉटम लेवल से बाजार डबल हो गए. तो इस दौरान काफी उतार चढ़ाव रहे बाजार में, कई शेयर्स के दाम काफी बढ़े हैं और अप्रत्याशित बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लेवल्स पर मार्केट्स में एक्टिविटी रही है. तो मुझे लगता है एक बहुत ही एक उतार चढ़ाव वाला वर्ष था और इस सप्ताह वो जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो रहा है. तो काफी उथल पुथल के बीच कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ नए इन्वेस्टर्स आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है. तो मुझे लगता है ये पूरा मार्केट जो है उसको उस पर सेटल डाउन कर रहा है. और यदि हम पिछले 2 सप्ताह की जो गिरावट है उसको भी देखें तो वहां पर जो शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर था, फार्मा था, आईटी सेक्टर था, वहां हमने देखा, और पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सेक्टर, वहां प्रॉफिट बुकिंग रही है. तो मेरा अपना अनुमान ये है कि अब ये बाजार जो है वो सेटल हो रहे हैं और जैसे जैसे बाजार सेटल होंगे एक बाजार में स्टेबिलिटी भी हम देखेंगे, वॉलेटिलिटी भी कम होगी और शायद आने वाले 1 या 2 महीने हम नए इन्वेस्टर्स और नए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हम बाजार में देखेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि बाजार आने वाले कुछ सप्ताह के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ चलेगा. Puneet, you mentioned about the calendar effect from the 1st of April will be the start of the new financial year. But what about the 4th quarter? Do you see traction in the market right now because of expectations of macroeconomic numbers and corporate earnings? Do you expect that to be in the green? Is that the expectation of the buying interest right now? And do you see that sustainable into the next week and for the next month? So, Arjun, at the macroeconomic level, if you look at the data which RBI has released and some of the high-frequency indicators that we have got, I can say that the GDP or the overall economic activity in the country in the 4th quarter, which is the January to March quarter, would have been in the positive terrain. Now, this is a big change from the 1st and 2nd quarter when we saw GDP fell very sharply. And then in the 3rd quarter, GDP was slightly higher, but largely around the unchanged zone. So I think 4th quarter numbers will show that the GDP and economic activity in the country has grown. So companies would definitely report a higher top line in 4th quarter. However, profits may not be that high because of cost push. We have seen commodity prices go higher. We have seen some of the issues on supply chains and logistics. So clearly, corporate sector or the economy is still facing a lot of challenges. But my belief is that the numbers, when they finally come out, we will see some sectors will do extremely well. Like Sonu mentioned earlier, the metal index, I think the metal companies should do very well. We should see good numbers from financial sector companies, pharma companies. So some of these sectors will surely report good numbers. We would also see encouraging signs from other sectors which have been hit badly. So my own take is that overall we'll find the numbers, corporate numbers to be good for 4th quarter. For the next 1 year, guidance will be important. But if I stay with the narrative, I stay with what the captains of industry and what RBI has been saying, I would say yes, the next financial year definitely appears to be very good. We already have estimates of 12 to 13% GDP growth. So if you ask me, yes, calendar year, the next financial year is going to be, should be very good
for corporate performance as well as for market. पुनीत, अगर हम स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, जिसका आपने अभी जिक्र किया 2-3 बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आई है, नो एक्सटेंशन ऑफ मॉरेटोरियम, जो सस्पेंशन किया था आईबीसी प्रोसीडिंग्स का, उसको भी हटा दिया गया है, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है, और जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो सभी बोरोअर्स के लिए वेव ऑफ कर दिया गया है। आपको लगता है कि अब एनपीएज में वृद्धि की आकांक्षा बन गई है, बैंक्रप्सी फाइलिंग्स बढ़ने की आकांक्षा बढ़ गई है? किस तरह से देखते हैं आप, कितना चैलेंजिंग होगा ये आने वाला समय एमएसएमईज के लिए, बोरोअर्स के लिए और बैंक्स के लिए? तो पहले हम बैंक्स की बात करते हैं। तो बैंक्स में देखिए, अभी तक उन्होंने एनपीएस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर था तो उन्हें एनपीएस आप अनाउंस नहीं कर सकते, पर बैंक, जितने भी बड़े बैंक्स थे, उन्होंने प्रोफॉर्मा एनपीएस, यानी उन्होंने ये कहा कि देखिए हम अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अनाउंस कर सकते होते तो हमारी परफॉर्मेंस बैलेंस शीट ये होती, और उन्होंने नंबर्स दिए हैं। मेरा मानना यह है कि वो नंबर्स बहुत अलार्मिंग नहीं है, बहुत बड़े नहीं है, और जब एक्चुअल एनपीएस अनाउंस होने की बात आएगी तो वो नंबर्स भी बेहतर होंगे, थोड़े इंप्रूव करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो एनपीएस का एक फियर है कि एनपीएस बहुत बढ़ जाएंगे इसके बाद 1 अप्रैल के बाद, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा उसमें कोई तब्दीली आने वाली है। तो हालांकि कुछ चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल सेक्टर के सामने। जो अच्छी खबर है वो ये है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफी तेजी से पिकअप कर रही है, और वी माइट इवन सी डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ इन द कमिंग ईयर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे काफी अच्छी उम्मीद है, क्योंकि परफॉर्मेंस रहेगी, पर्टिकुलरली बैंक्स जो हैं, इवन एनबीएफसी शुड डू बेटर, बट डेफिनेटली बैंक्स जो हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, वहां पर हमें अच्छा प्रदर्शन मिलना चाहिए। साथ में ही यदि आप पूरे इकोनॉमी में जो दूसरे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनकी तरफ अगर करें तो मुझे लगता है कि वो सभी एक रोबस्ट ग्रोथ को अभी फिलहाल इंडिकेट कर रहे हैं, और आई थिंक दैट शुड डिफाइन द मार्केट्स एंड इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड। Puneet, in today's trade, Bank Nifty went up by 1%. And my question is that what is the options market telling you about market sentiment right now that the April series has started in terms of trading in securities away from the macroeconomic data? So interestingly, the options market is telling us that markets, at least for the time being, are bullish, because what has happened is that the rollovers, which are roughly about 60 to 65% every month, in this month, from March to April, the rollovers in the derivatives market are more than 70%. So clearly, many more people have carried forward their bullish bets on the market. And also, if you look at the options trade, the volatility index, which is called the VIX, and also we call the fear index, that fell very sharply today. It fell by about 8-9%, to close to about 20 level. So the lower the VIX, the more confident the market is about the dump move or stability in the markets. So my own sense is that the markets are telling us that the investors are more confident of a good, positive trade going forward. And I think that appears to be a reasonable assumption right now. पुनीत, रियल एस्टेट सेक्टर से एक इंटरेस्टिंग खबर आई है कि 2021 में टॉप 7 इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट्स में रेजिडेंशियल सेल्स प्री पैंडेमिक लेवल्स को एक्सीड कर गई हैं। सो आपको ये कितना एक उत्साहजनक खबर लगती है बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन जो एक इंडस्ट्री है उससे डायरेक्ट उसका रिलेशन है। बिल्कुल शुरू आपने सही कहा, ना सिर्फ ये रियल एस्टेट या होम बायर्स या कमर्शियल मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है पूरे देश में, इन द मैन्युफैक्चरिंग, इन द इंडस्ट्रियल सेगमेंट। और आप देखिए वो हर इंडस्ट्री से जुड़ी है, चाहे स्टील हो, सीमेंट हो, टाइल्स हो या होम मटेरियल्स हो, किसी भी इंडस्ट्री से उसको गति मिलती है। और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर ना सिर्फ पिछले वर्ष उसमें काफी नेगेटिव सेंटिमेंट देखा था, आप देखें तो पिछले 5-6 वर्षों से पूरा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो काफी नीचे वो आ रहा था, और रियल एस्टेट कंपनीज काफी चैलेंजेस फेस कर रही थी। मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और आने वाले समय में जो डिमांड हम ग्रोथ देख रहे हैं वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। हमने नहीं सोचा था कि रियल एस्टेट सेक्टर इतनी जल्दी रिकवर कर पाएगा, पर हम देख रहे हैं कि इसमें काफी ट्रैक्शन है। और मुझे लगता है कि पूरी इकोनॉमिक रिकवरी में जो टर्न अराउंड है उसमें रियल एस्टेट सेक्टर का काफी अहम भूमिका रहेगी।
Puneet, how important is the macroeconomic data coming out from the U.S. economy important for the equity markets in India in terms of the jobs data and the fourth quarter GDP, which is at 4.3%? What does it mean in terms of movement of capital investment in our equity market when these kind of figures are being published? So the U.S. economy is going through a very different phase right now. Not only is the issue about pandemic there, but also there's a major change in government because from the Republican-led government to a Democrat-led government, there's a sea change in the policies. In fact, they're looking at increasing income tax rates in the USA. They're looking at changing the entire structure of corporate governance and taxation, basically. Now, that may mean that the old policy of America first, that might change a little bit. A lot more companies which were trying to go back to America and were trying to put up their plants there and centralize operations in America may no longer have an incentive to centralize operations in America, basically which means that we should see more investments coming from America into India. We might see more business with America. So I think it's positive news for people like us, particularly because India has now become a very close ally of Americans and American economy. And I see a lot of gains for Indian economy going forward in the next 4-5 years, particularly from the USA. पुनीत, आपने टैक्स रेट्स की बात की तो भारत में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैं वो उनमें कटौती की गई तो अब कहा जाता है कि विश्व में वन ऑफ द लोएस्ट लेवल के टैक्स रेट्स हैं. हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी अभी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लोज पे हैं. सो आपको लगता है कि जो भारत की अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो मुहिम है, ये सब देखते हुए जो इंसेंटिव्स दे रही है सरकार, उससे भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनने का जो एक ड्रीम है, वो कितनी जल्दी आपको लगता है कि उस तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे? सोनू, देखिए, मेरी पर्सनल राय है कि जो स्कीम और जो स्टेप्स लिए गए हैं पिछले कुछ महीनों में, उनका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत बड़ा पड़ेगा. और कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत चाइना को सीधा चैलेंज कर पाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, जो हमने कभी मुमकिन सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है. तो लेकिन देखिए, इन सब चीजों, चाहे फैक्ट्रीज लगने की बात हो, और ये जब स्टेप्स का जो इम्पैक्ट है वो 3 से 4 वर्ष में आता है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री लगाने में. तो मुझे लगता है जो स्टेप्स लिए गए हैं उनका रियल इम्पैक्ट हम आज देखेंगे, पर आई थिंक दे आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, और हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इंडियन इंडस्ट्री में इन नेक्स्ट 3-4 years. And let's now have a look at our currency market, starting with the valuation of the rupee. The rupee at the foreign exchange market has strengthened by 11 paise to 72 rupees and 52 paise against the US dollar. The dollar index, which indicates the US dollar strength against a basket of 6 other leading currencies, remained flat at 92.85. Puneet, on money matters, the rupee had strengthened by 22 paise, then by the close it's 11 paise. How important is the valuation of the rupee right now when you compare it to the purchase of gold, which has come down, the precious metals market? I also asked you about how the oil market, the prices have been going up when you pair the currency with which you make these purchase of commodities. How important is this comparison and then arbitrage in terms of investment when you look at the valuation of the rupee? So, Arjun, interest rupee in 2-3 aspects. First, of course, rupee has been one of the most stable currencies in Asia in the last few months. In fact, many emerging currencies had appreciated a lot earlier, then they fell very sharply. But rupee has been kind of stable and in a very narrow range, which I think is a commendable job done by RBI. Secondly, India is now the 4th largest holder of foreign exchange reserves in the world. So after China, Japan, and Switzerland, India is now the 4th largest, just ahead of Russia as a holder of foreign exchange reserves. That gives us enormous power to stabilize our currency and to make our trade competitive. So I think, given the overall macro situation, which includes balance of trade, it includes trade deficits or current account deficits. If I look at all these things, my view has been for a pretty long time that rupee is very stable currency, and we will see rupee remain in this narrow range probably for next 3-4-5 years. I think that's very, very beneficial, very, very good for investors as well as for
traders and people doing exports and imports from India. पुनीत, इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर बढ़े, जो आप रुपए बता रहे हैं कि एक सूचक है हमारी स्थिरता का, हमारी इकोनॉमी की स्थिरता का, मैक्रो जो आ रहे हैं इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए कोविड की जो वैक्सीनेशन मुहिम है वो तेजी से बढ़ रही है, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए आपके लिए क्या ब्रॉड एडवाइस होगी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए? क्या वो एसआईपी के थ्रू बने रहें बाजारों में, या कुछ उनको विड्रॉल भी करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए धीरे धीरे? सुनो, देखिए, जहां तक जो लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो अच्छा है कि वो एसआईपीज, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ही पैसा लगाते रहे। उनके लिए जो बाजार के उतार चढ़ाव हैं उससे कोई उन्हें नुकसान नहीं होता, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। और यदि इनफैक्ट बाजार गिरते हैं सडनली तो उसमें उनको फायदा होता है, क्योंकि आप उसमें भी आप इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और पैसिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एसआईपीज एक अच्छा रास्ता है, और जहां पर उन्हें कोई खास स्ट्रगल नहीं करना। जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और काफी लोग अब मार्केट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि वो समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहें और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बाजारों में ये बात मान के चलिए आपकी, जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएंगे उतनी ही वॉलेटिलिटी बढ़ेगी बाजारों में, तो बाजार ज्यादा मौका रहेगा। तो मेरी राय ये रहेगी कि जो मिड कैप अच्छी कंपनीज हैं, मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, लार्ज कैप्स हैं, उसमें वो इन्वेस्ट करें और समय समय पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, बाजारों में वो बने रहें। जरूर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जहां उनको थोड़ा प्रॉफिट मिले वहां पार्शली अपने प्रॉफिट को बुक करते रहें। आई थिंक बी वाइज। जी, अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। वैश्विक बाजारों में आज तेजी लौटी और एशियाई बाजार 3 महीने के न्यूनतम स्तर से बढ़कर बंद हुए। निवेशकों ने अपना ध्यान पश्चिम और चीन के बीच बढ़ते तनावों की जगह वैश्विक आर्थिक सुधार से जुड़े आशावाद पर केंद्रित किया। आकर्षक निम्न मूल्यों पर हुई खरीदारी से भी सूचकांकों को बढ़ावा मिला। जापान का निक्केई सूचकांक, हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक प्रत्येक 1.6% के उछाल में रहे। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.1% बढ़कर बंद हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.5% की वृद्धि दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां तेजी का रुख था। जर्मनी का डैक्स 0.6% के उछाल पर था। लंदन के फुटसी में 0.7% की वृद्धि थी और फ्रांस का कैक 0.4% की बढ़त पर था। क्या कहेंगे आप पुनीत, चीन और अमेरिका के बीच आप क्या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का समीकरण देखते हैं आने वाले समय में? सुन, देखिए, चीन और अमेरिका जो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका इज द लार्जेस्ट, अबाउट $19 ट्रिलियन इकोनॉमी है। चाइना इज अबाउट $12 ट्रिलियन इकोनॉमी, विच इज सेकंड लार्जेस्ट। तो उनके बीच में एक टसल चल रही है और मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म टसल है, ये कोई फौरी तौर पर खत्म नहीं होने वाली। बीच में आप देखेंगे कभी समझौते हो जाएंगे, कभी लड़ाई हो जाएगी। इस बीच में मुझे लगता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक नहीं करेगी। डेफिनेटली कुछ कुछ चैलेंजेस रहेंगे ट्रेड को, बट आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी विल ग्रो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टसल। और खासतौर से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, हम ऑलरेडी देख रहे हैं, हमने डिस्कस किया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज खुली हैं जो पहले नहीं थी। तो मुझे लगता है कि उसका कुछ फायदा हमारे जैसे इकोनॉमीज को भी इसमें रहेगा। Well, let's have a look at the U.S. stock market. U.S. stocks rose yesterday as investors bought stocks likely to do well in the recovery. Labor Department data showing a decline in the number of Americans claimed unemployment also boosted sentiment. The Dow Jones Industrial Average surged 0.6%, the S&P 500 climbed 0.5%, and the Nasdaq Composite Index added 0.1%. Puneet, what is the securities market in America likely to perform with a change in presidency? Earlier we saw a jump in tech company shares, in oil and gas shares, in the U.S. Stock market, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite Index, especially with the corporate tax cut. How is the U.S. Securities market likely to perform now under its new policy, where you spoke about the personal income tax levels going to be rising? We are also seeing in the U.S. where there's a movement away from California into Texas. So these kind of changes, how is the U.S. economy going to show itself to the global economy in terms of its performance? So, Arjun, what we feel is that the U.S. economy is going to change the direction a little bit. Earlier, there was not too much reliance on IT and technology shares.
I think the Biden administration has recently announced that they're going to spend $3 to $4 trillion on rebuilding America, on American infrastructure, which means they will consume steel, they will consume cement, they will consume other basic materials. So basically, the economy which you call the real economy, the manufacturing economy, that might see a boost under the new administration. And therefore, if you see, we have been seeing that NASDAQ has been correcting significantly, but Dow Jones hasn't fallen that much. So I think there is some rebalancing happening there. Even then, I think there will be consolidation because there's talk of increasing taxes on American corporations. So clearly, markets are going to take a breather. Maybe in a month or two, but my own sense is that we're going to see the American economy will continue to grow because of the monetary policies of the U.S. government. So my sense is that it will stay positive with occasional hiccups really. So Puneet, briefly bond yield curve का आप आगे क्या prospect देखते हैं? क्या अभी भी उसमें जो sudden spots आते हैं जिससे एक स्टॉक मार्केट में भी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, उस तरह के होते रहेंगे इंसिडेंट्स? देखिए, बॉन्ड यील्ड अभी पीछे 6.7% थी, वहां से बढ़कर वो 1.8% गई और हमने देखा काफी उसको लेकर चिंताएं रही। लेकिन यदि आप इसको स्टैंड अलोन देखें तो अब 1.6% जो बॉन्ड यील्ड है, यानी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है 10 ईयर बॉन्ड पर अमेरिका में, 1.6% बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इकोनॉमी को रोबस्ट रखने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे जब तक ये बॉन्ड यील्ड 2.4, 2.5 को क्रॉस नहीं करेगी अमेरिका में, तब तक मुझे लगता है कि कोई रियल खतरा नहीं है। दैट इज मोर ऑफ अ सेंटिमेंटल चैलेंज टू द मार्केट्स। तो मेरा अपना मानना यह है कि अभी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो कंफर्टेबल जोन में है और ये तभी होगा जब वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा। यदि अमेरिका में और ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन आ जाता है तो ये हमें खतरा रहेगा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यदि आने वाले 6 महीने या 1 वर्ष तक ऐसा कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट है ऑफ हायर इन्फ्लेशन। आइए अब चलते हैं कमोडिटीज की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 110 रुपए कम होकर 44,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। मई अनुबंध वाली चांदी का मूल्य भी 30 रुपए कम होकर 64,840 रुपए प्रति किलो पर था। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,726.30 प्रति आउंस पर था और चांदी $25.10 प्रति आउंस पर थी। Moving on to the oil market, oil prices today rose 2%, rebounding on concerns that it could take weeks to dislodge a giant container ship blocking the Suez Canal, which would squeeze supplies of crude and refined products. In intraday trade, Brent was trading around $63.20 per barrel, while WTI crude prices were around $59.80 per barrel. Puneet, how important is this logistic blockade for transportation, the Suez Canal, which had been built by a British conglomerate, now controlled, nationalized by the Egyptian government? How important is this in terms of price rise and supplies? So we all know that Suez Canal is extremely important for world trade because almost 70% of the global trade passes through that narrow stretch. And therefore, if that remains blocked for weeks, there's already a lot of concern about rising freight costs and a lot of delays in supply chains. So my own sense, this is going to create a short-term problem for the economies of many countries. But again, if you look at it in the long term, I think this will just be a blip in the long-term story. There will be alternatives which will be designed now to take care of such incidences. But for the time being, yes, it is causing a lot of concern, a lot of short-term spike in rates. But I think long-term, this will be just a blip, the long-term story. कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। और अब चलते चलते मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रमुख बाजार सूचकांक 1% से अधिक के उछाल में रहे। सेंसेक्स 49,000 के स्तर से ऊपर और निफ्टी 14,500 के ऊपर हुए बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की मजबूती रही और आकर्षक मूल्यांकन और आर्थिक सुधार पर आशावाद के बीच वैश्विक शेयर सूचकांक तेजी में रहे। And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.